Okay, good morning. Up till now, we have seen applications of vision system, different components of vision system, then different lighting techniques. Now, today we'll see another part, then that is considerations for an optimal lighting or illumination solution. Now, first is immediate inspection environment. Immediate inspection environment means what? Wherever we are now, you are knowing that inspect that vision system in case of machine vision or robotic vision is used to inspect or to identify the objects. Therefore, immediate inspection environment means what? Whatever part we have to inspect, that should come immediately in front of that lighting system. The next is ambient light contribution. Ambient means what? Sufficient. There should be sufficient light contribution should be there, or sufficient intensity of light should be there. Then sample/light interactions. Therefore, different light interactions will come. We have seen different lighting techniques, dark field lighting, backlighting. Therefore, that different types of lighting techniques interactions will be there. Then color analysis. Now, what is in the color analysis? Color analysis means you are knowing whatever parts we have to inspect, all the parts are not of the same color. There may be colorful things also, that also we have to illuminate or we have to light the things. Therefore, that color analysis must be carried out for the lighting technique. Then sample composition and transmittance means what? Fluorescence, then image reflection and polarizers. Therefore, fluorescence of light, you are knowing. What is not fluorescence of light? Fluorescence means glow. That light should, glowing effect should be there. Then image reflection, or whatever that light is going to fall on the object or things, it should get reflected. And then polarizer. Polarizer means what? It is nothing but lens. What that lens does, whatever signal comes, that lens condenses the signal and that lens transmits that signal. Then illumination or lighting techniques. Different lighting techniques we have seen. That is all these lighting techniques: backlighting, diffuse lighting, hemispherical, diffuse lighting, on axis diffuse, diffuse lighting, flat diffuse, then partial bright field or directional lighting, dark field lighting. Whatever these lighting techniques we have to consider, we have to take into account for illumination things or for lighting the things. Therefore, these are the considerations for an optimal lighting or illumination solution. Now, next is hierarchy of a vision system. Therefore, this is the hierarchy of a vision system. I will read this. First is right raster scan. It is further subdivided into pattern recognition, stereo, feature extraction. Then pattern recognition is further divided into specific objects. Stereo is in depth map and feature extraction is in edge map, grouping, line, curves, regions. That is about different features of the objects. Therefore, these are known as low level. Low level means starting level. Now, next is intermediate level. Labeling, objects, recognition. This is intermediate level or medium level. And high level means top level. Functional description. What is the functional description of the object after taking the image? Therefore, these are nothing but different levels. We are going to see these different levels. The collection of
processes involved in visual perception are often perceived as a hierarchy, spanning the range from low via intermediate to high level vision. The notion of low and high vision are used routinely, but there is no clear definition of the figure. Two similar objects, the distinction between what is considered high as opposed to low level vision, as shown in figure 4.28. Therefore, this is the diagram, this is the figure 4.28. Now, a vision is classified as low, intermediate, or high level vision based on specific activities during the image processing stage. They are explained below. Now, first is low level vision. The sequence of steps from image formation to image acquisition, etc., described above, along with the extraction of certain physical properties of the visible environment, such as depth, three-dimensional shape, object boundaries, or surface material properties, can be classified as a process of low-level vision. Activity in the low-level vision is to process images for feature extraction, edge, corner, or optical flow. Operations carried out on the pixels in the image to extract the above properties with respect to intensity or depth at each point in the image. One may, for example, be interested in extracting uniform regions where the gradient of the pixels remains constant, or first order changes in gradient, which would correspond to straight lines, or second order changes, which could be used to extract surface properties such as peaks, pits, ridges, etc. Now next is the intermediate level vision. In this level, objects are recognized and 3D scenes are interpreted using the features obtained from the low level vision. The intermediate level processing is fundamentally concerned with grouping entities together. The simplest case is when one groups pixels into lines. One can then express the line in a functional form. Similarly, if the output of the low-level information is a depth map, one may further need to distinguish object boundaries or other characteristics. Even in the simple case where one is trying to extract a single sphere, it is not an easy process to go from a surface depth representation to a center and radius representation. In contrast to higher level vision, the process here does not depend on the knowledge about specific object. Now next is the high level vision. Is equivalent to image understanding and is concerned mainly with the interpretation and scene in terms of the objects in it, and is usually based on knowledge of specific objects and relationships. It is concerned primarily with the interpretation and use of information in the image rather than the direct recovery of physical properties. In high-level vision, interpretation of scene goes beyond the tasks of line extraction and grouping. It further requires decisions to be made about types of boundaries, such as which are occluding and what information is hidden from the user. Further grouping is essential at this stage since one may still need
to be able to decide which lines group together to form an object. To do this, it is necessary to further distinguish lines which are part of the object structure from those which are part of a surface texture or caused by shadows. High-level systems are therefore object-oriented and sometimes called top-down. High-level visual processes are applied to a selected portion of the image rather than uniformly across the entire image as done in low and intermediate level visions. Now, difficulties in vision and remedies. A vision cannot uniquely represent or process all available data because of computational problem, memory, and processing time requirements imposed on the computer. Therefore, the system must compromise. Other problems include variation of light, part size, part placement, and limitations in the dynamic ranges available in typical vision sensors. A vision system requires specialized hardware and software. It is possible to purchase just the hardware with little or no vision application programming. In fact, a few third-party programs are available. A hardware-only approach is less expensive and can be more flexible for handling usual vision requirements. But since this approach requires image processing expertise, it is only of interest to users who wish to retain the responsibility of image interpretation. It is usual practice to obtain the hardware and application software together from the supplier. However, the user might still need custom programming for an application. When higher resolution system, color system or multi-camera systems are considered, data handling requirements become astronomical. Several methods can be used to reduce the amount of data handled and therefore the processing time. They are explained as follows. One approach is the binary vision, which is used when only black and white information is processed. Intensity variations and shades of gray are ignored. In binary vision, a picture is converted into a binary image by thresholding as illustrated in figure. In thresholding, a brightness level is selected. All data with intensities equal to or higher than this value are considered white and all other levels are considered black. Now this is the image thresholding. This is the initial image and this is 30% threshold. See that brightness level is selected and all data intensities with equal to or higher than this value are considered white and all other levels are considered black. Means whatever intensity levels are there, if we will select only one intensity level of this image, then whatever intensities are there or whatever data is there on this image of intensity is equal to or higher than are considered white and all other levels are considered as black. Another method of shortening process time is to control object placement so that objects interest cannot overlap in the image. Complicated algorithms to separate images are then not necessary and the image processing time is reduced. A third approach reduces data handling by processing only a small window of the actual data. That is, the object is located in a predefined field of view.
For example, if the robot is looking for a mark on printed circuit board, the system can be held in such a way that the mark is always in the upper right corner. A fourth approach takes a statistical sample of data and makes decisions on this data sample. Unfortunately, all of these approaches ignore some of the available data and in effect produce a less robust system. Processing time is saved, but some types of complex objects cannot be recognized. Therefore, this is nothing but hierarchy of a vision system and what are the difficulties and remedies in vision system. Now, next point is steps in image sensing and processing. First is image acquisition. Image acquisition means image is captured, image enhancement, image restoration, color image processing, wavelets and multi-resolution processing. Multi-resolution means your name, different types of resolutions are there. 100x, 200x, 300x, 500x, 1000x, like that. Or 1x, 2x, 3x, 5x. In camera it is there. Compression, morphological processing, segmentation, then representation and description, object recognition, knowledge base. Now first is image acquisition. This is the first step or process of the fundamental steps of digital image processing. Image acquisition could be as simple as being given an image that is already in digital form. Generally, image acquisition stage involves pre-processing such as scaling. Scaling means what? Either you can increase the scale of the image or you can decrease the scale of the image. Increasing the scale means what? That figure or image will become larger or wider, and decreasing the scale of the image means what? That image size of the image will become smaller. In image acquisition, an image is acquired from a VDCon, which is digitized, or from a digital camera, as explained in the previous section. Last time we have seen in the components of vision system, different types of cameras. The image is stored in computer memory, also called a frame buffer, in the format such as TIFF, JPG, bitmap, etc. The buffer may be a part of the frame grabber card or in the computer itself. Note that the image acquisition is primarily a hardware function. However, software can be used to control light intensity, focus, camera angle, synchronization, field of view, read times, and other functions. Image acquisition has four principal elements, namely a light source, either controlled or ambient, a lens that focuses reflected light from the object onto the image sensor, an image sensor that converts the light image into a stored electrical image, and the electronics to read the sensed image from the image sensing element, and after processing transmit the image information to a computer for further processing. A typical acquired image is shown in figure. This is their typical acquired image. Now image enhancement. Image enhancement is among the simplest and most appealing areas of digital image processing.
Basically, the idea behind enhancement techniques is to bring out detail that is obscured or simply to highlight certain features of interest in an image, such as changing brightness and contrast, etc. Therefore, see that image enhancement. This is the earlier figure. Now this we have increased the brightness or contrast, and this is after enhancement. Now image restoration. Image restoration is an area that also deals with improving the appearance of an image. However, unlike enhancement, which is subjective, image restoration is objective in the sense that restoration techniques tend to be based on mathematical or probabilistic models of image degradation. See that this is image restoration. This is earlier image. This is the image of the girl is there. Now some spots are there in the earlier image. Now you can see after image restoration how that image looks like. Now color image processing. Color image processing is an area that has been gaining its importance because of the significant increase in the use of digital images over the internet. This may include color modeling and processing in a digital domain. Therefore, you can see here this color figure is there. It consists of different fruits are there, orange, grapes, different fruits are there. Now, this color modeling and processing in a digital domain. Here you just see this figure earlier it was there. We saw all these three figures. These three figures are clubbed according to the colors. These three figures are clubbed according to the colors in one figure. Now see here, these grapes are there. Grapes represent this green color. Red. Again, we are going red color to this, miss whatever faint red color, or to the orange, or maybe here it is. You can see pineapple is there. Pineapple it is in yellow color. Maybe apple may be there here. Therefore, and blue color we are given to this fruit. Therefore, this is nothing but color image processing. Now wavelets and multi-resolution processing. That means what? Wavelets are the foundation for representing images in various degrees of resolution. Images subdivision successively into smaller regions for data compression and for pyramidal representation. Now what is this multi-resolution processing? One figure or one image is provided to us. It may be of resolution 100x or 500x or 10x. Suppose that figure, now multi-resolution processing, what we will do? We will put that figure or we will increase the resolution. If you will increase the resolution of that figure, what will happen? You are, we always remember, whenever you are increasing the resolution, that means you are focusing on the smaller part, and of that smaller part you are getting the big, that image. Means suppose bird is there, earlier bird is there. Now that resolution of that image of the bird is suppose 100x. Now if you will increase again up to 500x, therefore only its beak and its face will come in the image. Again you will increase up to 1000x, only its beak will come in the image. Therefore that is known as multi-resolution processing. Now compression. Compression means to compress or to decrease the size. Compression deals with techniques for reducing the storage required to save an image or bandwidth to transmit it. Particularly in the uses of internet,
it is very much necessary to compress data. Then morphological processing. Morphological processing deals with tools for extracting image components that are useful in the representation and description of shape. Therefore, this is nothing but morphological processing or skeletonization. See that this is introduction of robotics SK Saha. After reducing image to lines, now these words are looking bold. Now all these words are reduced to the line image. This is nothing but morphological process. Now segmentation. Segmentation procedures partition an image into its constituent parts or objects. In general, autonomous segmentation is one of the most difficult tasks in digital image processing. A rugged segmentation procedure brings the process a long way toward successful solution of imaging problems that require objects to be identified individually. Now, representation and description. Representation and description almost always follow the output of a segmentation stage, which usually is raw pixel data constituting either the boundary of a region or all the points in the region itself. Choosing a representation is only part of the solution for transforming raw data into a form suitable for subsequent computer processing. Description deals with extracting attributes that result in some quantitative information of interest or are basic for differentiating one class of objects from another. Object recognition. Recognition is the process that assigns a label such as vehicle to an object based on its descriptors. Last is knowledge base. Knowledge may be as simple as detailing regions of an image where the information of interest is known to be located, thus limiting the search that has to be conducted in seeking that information. The knowledge base also can be quite complex, such as interrelated list of all major possible defects in a materials inspection problem, or an image database containing high resolution satellite images of a region in connection with change detection applications. Therefore, these are the steps in image processing. We will see the videos, then you will understand. One minute. Okay. In the digital image processing. Hello viewers, welcome to my channel Concept Booster. In this video, you will learn steps of digital image processing.
These are the steps in the digital image processing. So let's move further. So processing challenge in the image processing is image acquisition. Image acquisition क्या होता है? सिंपली इमेज को ऑब्टेन करने का या इमेज को ऑब्टेन करने का प्रोसेस है या फिर इमेज को एक्वायर करने का प्रोसेस है. There are 3 ways to acquire an image. इमेज को कैप्चर करने के 3 वेज थे. Reflective mode imaging, the second one is emissive type imaging, and third one is transmissive imaging. इन तीनों के बारे में मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं. The next process is image enhancement. We know when we capture an image, this captured image may not be of good quality. मतलब कि इमेज की क्वालिटी खराब हो सकती है. ये क्यों होता है? Because of the factors such as noise, poor brightness, contrast और image में भी blur. तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी इमेज की क्वालिटी खराब हो सकती है. तो इसी क्वालिटी को ठीक करना है क्या होता है? इमेज एनहेंसमेंट होता है. फॉर एग्जांपल इन दोनों इमेज को अगर हम देखें तो फर्स्ट इमेज को अगर देखें ये डार्क इमेज है, सेकंड इमेज को हम देखें तो ये एनहांस्ड इमेज है. फर्स्ट इमेज में यू कैन सी ये डार्क इमेज है, इसको हमने क्या किया? इमेज एनहांसमेंट इसमें एल्गोरिथम लगाई और हम देख सकते हैं यहाँ पर उसकी क्वालिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह एडजस्ट करके क्या हो गया? हमारी एनहांस्ड इमेज मिल गई. तो ये क्या था? इमेज एनहांसमेंट. सेकंड स्टेप हमारा इमेज रिस्टोरेशन. The goal of the image restoration is same that of the image enhancement. However, the image restoration is different from image enhancement, as image restoration deal with degradation of extreme nature. Image restoration क्या होता है? जो हमारी इमेज है उसमें खराब हो जाती है अगर वो, तो उसको क्या करता है? वो रिस्टोर करता है. सच एज डिस्टोर्शन आ गया हमारी, क्रिएटेड बाय सेंसर सिस्टम, पुअर लाइटनिंग कंडीशन एंड ईटीसी. और इसी के साथ ही क्या है यहाँ पर जो ये रिस्टोरेशन में जो मेथड यूज करता है, वहां पर क्या करता है? मैथमेटिकल टूल्स का यूज करता है. तो ये डिफरेंस था इमेज रिस्टोरेशन में और इमेज एनहांसमेंट में. इमेज रिस्टोरेशन 2 टाइप इसमें एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इनवर्स फिल्टरिंग. देखिए जैसा कि नाम से लग रहा है इनवर्स फिल्टरिंग, इसमें हमें कुछ इनवर्स स्टेप करने होंगे. जैसे कि मान लो हमारे पास कोई इमेज आई और हमको प्री डिफाइन है कि डिस्टॉर्शन किस वजह से आया, क्या क्या स्टेप हुए होंगे जिनकी वजह से डिस्टॉर्शन आया है. अगर हमको पता है कि किस वजह से डिस्टॉर्शन आया, अगर हम उसका रिवर्स प्रोसेस कर दें तो हमें ओरिजिनल इमेज मिल सकती है. तो यही करती है ये हमारी एल्गोरिथम इनवर्स फिल्टरिंग. अगर हमारे पास इमेज आई है जिसमें कि डिस्टॉर्शन हुआ है, अगर उसका हमें ये नहीं पता है स्टेप्स की किस वजह से हुआ है, क्या क्या प्रोसेस हुई होगी जिसकी वजह से उसमें डिस्टॉर्शन हुआ है, तब हम यूज करते हैं इसमें ब्लाइंड डीकन्वोल्यूशन एल्गोरिथम. ठीक है. सो लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पर अगर ए पिक्चर को देखें तो ये ब्लर इमेज है, यहाँ पर रिस्टोर देखें हम तो क्या है? हमारी क्लियर इमेज यहाँ पर हमें मिलेगी. तो यहाँ पर क्या था? ब्लर इमेज थी, यानी इसमें डिस्टॉर्शन हुआ होगा. समटाइम्स क्या होता है कि हम फोटो खींचते हैं या तो मूवमेंट की वजह से या किसी और वजह से ब्लर इमेज आ जाती है, तो क्या होता है? इमेज में डिस्टॉर्शन हुआ. उसी डिस्टॉर्शन को यहाँ पर ठीक करते हैं हम रिस्टोर में. डिफरेंट एल्गोरिथम का यूज करके हमें रिस्टोर इमेज मिल जाती है. अभी क्या कर रहे हैं? इमेज की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेज कलर इमेज प्रोसेसर. अगर हम ग्रे कलर इमेज का यूज कर रहे हैं तब ये वाला स्टेप हम यूज नहीं करते हैं. जब हम कलर इमेज की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तब इस स्टेप का यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा वेवलेट्स एंड मल्टी रिजोल्यूशन प्रोसेस. वेवलेट्स क्या होती हैं? ये होती है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स. ठीक है. वेवलेट ट्रांसफॉर्म का हम यूज करते हैं to analyze frequency as well as time, and due to this we convert the image into multi resolution. multi resolution मतलब क्या? एक ही इमेज को हम डिफरेंट रिजोल्यूशन में तोड़ते हैं. रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मेनली होता है द नंबर ऑफ पिक्सेल्स इन एनी इमेज. उस इमेज में कितने पिक्सेल्स हैं. रिजोल्यूशन को हम ऐसे भी शो करते हैं कहीं, जैसे हमने देखा होगा 256 मल्टीप्लाई बाई 256. इसका मतलब क्या? 256 उसकी विड्थ है और 256 उसकी हाइट है, यानी टोटल कितने होगा? 256 मल्टीप्लाई बाई 256. जो टोटल आएगा वो क्या होगा? हमारा टोटल पिक्सल. तो ये क्या होगा? हमारा रिजोल्यूशन. और मल्टी रिजोल्यूशन बढ़ाने से क्या फायदा होता है? अगर हम इस इमेज को देखें, ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें देखें हम ट्राइंगल्स हैं हमारे. सेकंड इमेज में क्या किया गया है? इन ट्राइंगल्स के बीच में मिड पॉइंट लिया है
फिर फर्दर उनको ज्वाइन कर देगा, तो हमें ऐसी इमेज मिली। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ पिक्सल क्या हो गए, ज्यादा हो गए, इसमें नंबर ऑफ पिक्सल कम है इसकी तुलना, यानी कि रेजोल्यूशन इसका हाई है। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं जिसका रेजोल्यूशन हाई है उसमें फेस की बनावट कैसी दिख रही है, और जिसमें रेजोल्यूशन कम है उसमें फेस की बनावट कैसे दिख रही है। यानी कि रेजोल्यूशन क्या होता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एनी इमेज। द नेक्स्ट स्टेप इज कंप्रेशन। कंप्रेशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कंप्रेशन में क्या करते हैं हम, जो इमेज का साइज होता है, स्टोरेज साइज, उसको हम रिड्यूस करते हैं। बट ये ध्यान में रखें कि उस जो इमेज है, यानी उसमें इमेज में जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसमें कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, हम कंप्रेशन करते हैं। इससे क्या होता है, जो हम डाटा स्टोर करते हैं वहां पर हमारा लेस मेमोरी देती है इमेज, जब हम उसको स्टोर करते हैं। तो कंप्रेशन क्या होता है, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डाटा। इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम जितनी भी रिडंडेंसी होती है उनको एलिमिनेट कर देते हैं। यानी कि रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, फालतू, यानी किसी इमेज में जो फालतू चीज है, यानी अगर उनको हटा भी दिया जाए इमेज से, तो इमेज में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। वो जो पहले इंफॉर्मेशन दे रही थी, बाद में भी उससे तो वही इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंप्रेशन करने के लिए दो एल्गोरिथम होती हैं। फर्स्ट वन इज लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम एंड सेकंड वन इज लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स क्या होता है, जितने भी क्रूशियल पॉइंट होते हैं किसी इमेज में, क्रूशियल और वेरी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, उनमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये ज्यादातर मेडिकल में होती है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट भी वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है डॉक्टर को, इसलिए जो क्रूशियल पॉइंट होते हैं उन पर छेड़छाड़ नहीं करते। ऐसे जगह पर हम यूज करते हैं लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम। सेकंड है लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम। इसमें क्या करते हैं हम, अगर इस एल्गोरिथम का यूज करके हम किसी भी इमेज को कंप्रेस करते हैं, तो ह्यूमन आई के द्वारा वो इजीली डिटेक्ट हो जाएगी। यानी जो पहले इंफॉर्मेशन दे रही थी, बाद में वो आसानी से ह्यूमन आई की डिटेक्शन में नहीं आएगी, और वही इंफॉर्मेशन ह्यूमन इजीली उससे गैदर कर सकता है। तो जब यूज होती है हमारी लॉसलेस कंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरे टू इमेज है। फर्स्ट वन, दिस इज ओरिजिनल इमेज एंड दिस वन इज कंप्रेस्ड इमेज। इसको मैंने 60% तक कंप्रेस कर दिया है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अगर हम ओरिजिनल इमेज देखें और ये कंप्रेस्ड इमेज देखें, दोनों को आप देख के बता सकते हैं कोई डिफरेंस? नहीं, यहाँ भी वही इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें और यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन दिख रही है। बट अगर हम साइज की बात करें, ये इमेज 253 KB की है और इस इमेज को देखें हम तो ये 100 KB की इमेज, यानी साइज क्या होगा इसका, रिड्यूस कर दिया। यही क्या होता है हमारा कंप्रेशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेगमेंटेशन। इस स्टेप में क्या करते हैं हम, जो इमेज है उसको हम डिफरेंट सेगमेंट में क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और जिस सेगमेंट की हमें जरूरत नहीं होती है, जो सेगमेंट हमारा रिक्वायर्ड नहीं होता, उसको क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई इमेज दी गई है, उस इमेज का जो ऑब्जेक्ट है केवल उसी की जरूरत है, तो जो उसका बैकग्राउंड अगर हम उसको रिमूव कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट सेगमेंट में तोड़ते हैं, उसमें से रिक्वायर्ड एंड अनरिक्वायर्ड को हम चूज करते हैं। जो अनरिक्वायर्ड रहता है, जिसकी डिजायर होती है, हम उसको अलग कर लेते हैं, जिसकी डिजायर नहीं होती उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या होती है। डिस्क्रिप्शन में क्या करता है, हम जो इमेज है उसके एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट करते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर्स क्या होते हैं, मान लीजिए लैपटॉप के फीचर्स क्या होते हैं, उसमें कीबोर्ड रहेगा, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, डेस्कटॉप की तरह बड़ी स्क्रीन नहीं होगी। अगर कोई इन फीचर्स को देखे तो आसानी से कह सकता है कि ये क्या है, लैपटॉप। या फिर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें एक नोज होगी ह्यूमन की तरह, अगर ईयर्स हैं, आईज होंगी, दो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, उन सबको देख के बता सकता है ह्यूमन। तो ये क्या हो गए, सभी आईज, नोज, हैंड्स, ये सभी क्या हो गए, फीचर्स हो गए। तो इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन द नेम सजेस्ट, हम इमेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो इमेज फर्दर कंप्यूटर में प्रोसेस हो सके। इसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं किसी इमेज को। फर्स्ट इज बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन। बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मतलब एक्सटर्नल बाउंड्री होती है इमेज की, ऑब्जेक्ट की, उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस इमेज को देखें, इंडिया का मैप है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस किया गया है, बाउंड्री पर फोकस किया गया, शो करने को, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा रीजनल रिप्रेजेंटेशन। जब हम बाउंड्री को ना लेकर उसके अंदर फोकस करते हैं तो क्या होता है, हमारा रीजनल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, इस इमेज को देखें हम, ये भी इंडिया का मैप है, बट यहाँ पर बाउंड्री को न लेकर क्या किया गया है, अंदर फोकस किया गया है। तो ये क्या है, हमारा रीजनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन।
प्रीवियस स्टेप था हमारा डिस्क्रिप्शन, उसमें मैंने बताया था क्या करते हैं हम फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स हो सकते हैं, उसका कलर हो सकता है, उसका शेप हो सकता है, उसके साइज हो सकता है, जैसे क्या थे फीचर्स। इन्हीं फीचर्स के आधार पर इन्हीं फीचर्स को देखकर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसको हम लेबल देते हैं। लेबल क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई इमेज आती है, मान लो उसमें इमेज में जो ऑब्जेक्ट है उसमें कार के फीचर है, जितने भी कार के फीचर होते हैं वो सभी है उसमें। तो यहाँ क्या करेगा कंप्यूटर, जो डिवाइस होगा उस ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको लेबल दे देगा कि हमारी कार है। तो यहाँ पर लेबल क्या हो गया, कार, यानी उसका नाम। ऐसी कोई और ऑब्जेक्ट है, मान लो मोबाइल है, अगर मोबाइल के फीचर्स हो रहे हैं उस इमेज को देखकर, तो उसको लेबल दे देगा वो मोबाइल है। अगर कोई और चीज है तो उसको क्या कर देगा, लेबल होता है। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और लेबलिंग करते हैं। इसमें ये है नॉलेज बेस्ड। नॉलेज बेस्ड क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारी, जो इनिशियल इमेज होती है प्रोसेस से पहले, और जो प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेरी डाटा क्रिएट होता है उसको स्टोर करते हैं हम, और जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको भी इसमें स्टोर करते हैं। These are the steps of digital image processing. If you like the video, please hit the like button and share the video. If you want the further videos of digital image processing, please subscribe to our channel. Thank you. Are you an entrepreneur who's really looking to automate different parts of your business so that you can really run that business by letting technology do a lot of work for you instead of the repetitive tasks? See, if you're Okay, these are nothing but steps in image processing. Another video is there that we will see in next lecture. Again, I will revise the things so that you will understand it. These are the different steps in image sensing and processing. That is, image acquisition is to capture the image enhancement, image restoration, color image processing, wavelets and multi-resolution processing, compression, morphological processing, segmentation, representation and description, object recognition, and all that comes after the knowledge base. Now this image acquisition we have seen, this is the first step or process of the fundamental steps of digital image processing. Image acquisition could be as simple as given an image that is already in digital form. The image acquisition stage involves pre-processing such as scaling, etc. In image acquisition, an image is acquired from a Vidicon camera which is digitized, or from a digital camera, CCD or CID, charge coupled device. CCD means charge coupled device, as explained in the previous section. The image is restored in computer memory, also called a frame buffer, in the format such as TIFF, JPG, bitmap, etc. The buffer may be a part of the frame grabber card or in the computer itself. Note that the image acquisition is primarily a hardware function. However, software can be used to control light intensity, focus, camera angle, synchronization, field of view, read times, and other functions. Image acquisition has four. What is what? Any problem, Gansham? Hello? Therefore, these are the different steps in image processing.
image enhancement, image restoration, color image processing, wavelets and multi-resolution processing, compression, morphological processing, segmentation, representation and description, object recognition, and at last is knowledge base. Means what? It may be as simple as detailing regions of an image where the information of interest is known to be located, and thus limiting the search that has to be conducted in seeking that information. The knowledge base also can be quite complex, such as an interrelated list of all major possible defects in a materials inspection problem, or an image database containing high resolution satellite images of a region in connection with change detection applications. Therefore, we will stop here. Next time we will see camera sensors. Different camera sensors are there: charge coupled device, CCD, CMOS, complementary metal oxide semiconductor, then line scan, area scan, how to choose a machine vision camera, what is calibration in machine vision. These some points are remainder that we will see, and then this chapter will be get completed. Okay, thank you very much. Thank you. Now you can leave.